Hello G, hello, welcome back to another video. This is Elena Michelle and welcome to a brand new video. So today is 24th of May and हम आज का vlog start कर रहे हैं अभी का time हो रहा है 3:51 PM, तो मतलब शाम होने वाली है और आज है weekend और हमारा है long weekend. So I want you to be with me and let's quickly start with today's vlog. बहुत सारे काम करने हैं अभी, बहुत सारे. So I want you to be with me. And let's quickly start with today's vlog. Let's get started! Hi guys, so मैं अभी सुबह उठी हूँ और मैंने देखा मेरे कमरे में, मैं वॉशरूम में गई और मैंने देखा कि नीचे वहाँ पे ants थी, black ants. And I was like, how is that possible? How could you get black ants in England? I cannot imagine anything apart from spiders. मैं room में गई and then I saw more ants. And I was like, what is this happening? And मेरा ये जो पूरा table है where I get ready, I saw this dabba. I've kept this dabba which I kept for the apples or the fruits just to defrost, and while I'm in the room I eat that. I could see a little, can you see that tiny creature inside ये? That's an ant. And when I woke up, I saw this dabba and it was full of ants. I was like, no, you cannot be here. तो आज हम करने वाले हैं पूरी इसकी सफाई. थोड़ी डस्टिंग भी हो जाएगी. उनको साफ करते हैं और रूम तो बाकी पूरा क्लीन ही है. तो ये सारी चीज़ें करते हैं. अभी मैंने व्लॉग एडिट करके डाला है और व्लॉग अपलोड होने वाला है जल्दी ही. So I have to clean this. ये क्लीन करें उसके पहले मैं लगाऊंगी थोड़ा फेस मास्क ताकि हम काम करें और तब तक फेस मास्क भी लग जाए. फिर we'll take a bath. ये लगा लेते हैं. लग चुका है और हम अब ऐसे ही काम करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे you have to be very careful with the packs that you apply on the face, क्योंकि इन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है मुल्तानी मिट्टी, बेसन, हल्दी, इन सब का. They think it's shit. So you have to be very careful about how you put it. If it's in there in your sink or in your space, you have to just clean it really well. ये पूरा मैंने एम्प्टी आउट कर दिया. ये तो क्लीन है. मैं इसको बस थोड़ा सा डस्टिंग कर देती हूँ. यहाँ पे मेरे पास ये वाला एक मेरा हैंड वॉश था, उसकी बॉटल जो है ये एम्प्टी हो गया एंड इट्स वेरी प्रिटी. आई विल जस्ट फिल माय सेटाफिल एंड दिस मॉइस्चराइजर. इसको मिक्स करके और मैं इसमें फिल करती हूँ. ये देखो अभी ये ग्रीनिश हो गया. इसमें डालते हैं सेटाफिल. अंदर देखना चाहेंगे इसके gooey. ये एलोवेरा जेल है इसलिए ग्रीनिश दिख रहा है. पता नहीं 100 पंप ना निकल के हैं. सेटाफिल इज लाइक रियली अबंडेंस. ये था मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया. लेट्स मिक्स दिस नाउ. ये बन गया हमारा मॉइस्चराइजर. इसको मैं वॉशरूम में रखूंगी ताकि हैंड वॉश करने के बाद आई कैन यूज दिस. लेट्स डू द ट्रांजिशन. 1 2 and 3. Here we go.
कुछ इस तरीके का रूम दिख रहा है और अभी बहुत एस्थेटिक सा लग रहा है. सो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि ये ड्राई हो गया है एंड मेरा रूम भी पूरा साफ़ हो गया है. उसके बाद मम्मा पापा ने ये गरम मसाला और कुछ मसाले मेरे लिए भिजवाए थे, तो वो मैं रीफ़िल करने जा रही हूँ. मेरा फेरेरो रोशर का छोटा सा डब्बा है and I will be using it to refill dishwashing soap. तो हमने इसमें डाल दिया है and now we'll keep it in the kitchen. Yes, done. Hello, तो हम आ चुके हैं अभी और फेस मास्क उतार लिया है और नहा के मैं आ गई हूँ. अभी खाना खाने जा रही हूँ. यहाँ पे मेरी कैंडल चल रही है and this is a fragrance candle. बहुत लाइट सी फ्रेगरेंस है इसकी and this is a Revive Rose, Geranium and Lavender. Very mild fragrance. I want you to meet my plants. So they're doing good. And also we have a new leaf in the Monstera. So now let's go for dinner. And I'll have the dinner and I'll meet you then. So these are my natural hairs. All wavy and curly. This time I'm thinking that let's leave them naturally. I really like this natural beachy look. Let's go. Let's go for the dinner. So we are going out. यहाँ पे कपड़े मैंने लगा दिए हैं फॉर वॉशिंग और हम जा रहे हैं टेस्को. ओह कितनी सारी सीगल्स. मौसम अच्छा है तो उन लोगों को घूमने में मज़ा आ रही है. तो अभी रात हो गई है और हम टेस्को से आ चुके हैं और चॉकलेट खा चुके हैं. एंड या आई कंप्लीटेड माई वर्कआउट एंड माई जर्नल बाइबल स्टडी सब अभी करा. और मैं सोच रही थी कि कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को, जैसे मैं जो 6-7 एक्टिविटीज़ एवरी डे टास्क करती हूँ ना, तो उनको कैसे लाइन अप करूँ कि एक भी चीज़ छूटे नहीं और आखिरी के लिए ना रहे. सो या आई केम अप विद अ प्लान. Associate all the tasks that you want to do on the daily basis with some activity. So for example, मैं supplements को breakfast के साथ में pair up कर दूँ कि whenever I will have my breakfast, then there's a compulsory part that I will take the supplements as well. So you will not miss your supplements. So there are 3 things that I will be doing. Number 1, with breakfast, I will be having my supplements. And I will be doing the Bible reading, Bible study. By lunch, after coming back home, before lunch, I will do my workout just after the work. And then I will wash my face and then do the skincare then and there. Third thing, कि जब when I will be on the bed, तब मैं करूँगी सबसे पहले journal. And when I will be done with all of those things, then I'll do my vlog का edit next day के लिए. So that's how I will keep on track even when I'm on work. क्योंकि holidays में तो सब manage हो जाता है, but when you're at work, then it's a bit, bit tricky to complete all the tasks. But yeah, we are doing good, and we started on 19th. No, we started on 14th, and it's the 10th day today. We are going good. एंड हमने pretty much सारे ही टास्क्स में अभी तक एवरी डे करा हुआ है. 3 में 1 मिस हुआ है. दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी. आई नो यू विल ऑल बी विद मी एंड दैट्स इट. बिकॉज ऑफ माई सप्लीमेंट्स एंड माई वर्कआउट, माई वाटर इनटेक इज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड and my healthy options for eating is also improved. There was a time when it was very difficult for me, or actually impossible for me, to keep up with the things or be disciplined in anything. But now when you work on yourself and clear all your clutter, आगे बढ़ना है, अब discipline होना है. So it's something like really the best thing that you could do for yourself. And I really am loving this journey of being disciplined. And last time I did the skincare discipline, it was for almost continuous 234 days. Continuous for 234 days. And I'm so happy that I did that. And it was continuous, not even missing
a single day. Even when I was in flight, I did my skincare at night and then slept. So yeah, I'm really enjoying it. So that's it, and meet you guys in the next vlog. See you guys tomorrow. See you. Bye. Happy Sunday.